हाय टीम डिज़ाइन। तो आज हम देखेंगे कि जब आपके पास एक SaaS प्रोडक्ट आता है तो उसकी ब्रांडिंग को आप किस तरह से अप्रोच करते हैं। जब हमारे पास आया तब हमने किस तरह से अप्रोच किया एंड होपफुली यू कैन टेक अवे अ थिंग और टू फ्रॉम इट। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। द नेम ऑफ द ब्रांड इज Sentra. Scent is sentiment and rasa is emotions or feelings in हिंदी, देवनागरी, संस्कृत स्क्रिप्ट। अब ऐसे ब्रांड के लिए जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो सबसे पहले वी रीच आउट टू द टारगेट ऑडियंस कि विच काइंड ऑफ पीपल दे आर टारगेटिंग। सो दे आर ऑब्वियसली टारगेटिंग जेन जी फाउंडर्स हु आर ओपन टू ब्रांडिंग ऑन रेडिट पे सब लोग ब्रांड नहीं करना चाहते एंड Reddit is a very underutilized marketing channel in the entire marketing space as far as I've seen, as far as I've been in the industry. तो जब आप ऐसी चीज़ के लिए ब्रांडिंग करते हैं जिसकी अवेयरनेस कम है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, सो यू नीड टू बी माइंडफुल हाउ दैट विल सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। सो सपोज आपकी एक कंपनी एंड यू वांट टू नो कि हाउ टू मार्केट योर सेल्फ ऑन रेडिट। तो अब उसके लिए आपको जानना होगा कि रेडिट पे आपकी कंपनी के बारे में कैसा सेंटिमेंट है, कैसी बातें चल रही हैं। यू वुड वांट टू एनालाइज एंड स्क्रूटनाइज योर करेंट ब्रांड प्रेजेंस ऑन रेडिट सो यू कैन प्लान बेटर फॉर द फ्यूचर। सो व्हाट दिस टूल डज इज कि आप इस टूल के पास आएंगे एंड दिस टूल विल स्क्रूटनाइज एंड एनालाइज a hell lot of Reddit posts for you and give you a sentiment analysis कि आपकी ब्रांड का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है amongst several Reddit communities and how this works behind the scenes that we'll see later down the line in the video. Now approaching right into the branding process, हमने बहुत सारे सबसे पहले तो लोगो ऑप्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए। Most of the concepts revolve around creating awareness that we are a bridge हमारे क्लाइंट और उनकी आइडियल टारगेट ऑडियंस के बीच में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने दो एंटिटीज बनाई हैं, हमारे आइडियल क्लाइंट एंड हमारे आइडियल क्लाइंट की आइडियल टारगेट ऑडियंस, एंड ये हम एक्टिंग एज अ ब्रिज। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। दीज आर टू ड्रॉप्स from the word rasa enclosed in a message bubble which shows conversation. So it shows that two droplets going up and down represent the sentiment going up and down, and the message bubble shows that some conversations are being happening due to which this fluctuation is there. So ये एक पूरे ब्रांड मैसेजिंग को encompass करता है. So it's like a pretty good concept, but I do not hate any concept of mine. We explored a lot of concepts. This is also one of them. हमारे client, उनके ideal target audience and we acting as a bridge. यहाँ पे I imagine 4 entities, हम, हमारे client, Reddit and हमारे client के target audience, ideal target audience. Here also the same bridge concept applies. Then here I have an interesting stat जिसके basis पे मैंने डिज़ाइन किया था. So if you come up here, you will see that Reddit can offer high engagement at lower cost when targeted well, leading to 25% decrease in CPC. 25% decrease in cost per click is a great efficiency. And I thought कि अगर हम इसे किसी तरह से visually represent कर पाए then it will be great. So this concept explores that this is an entire marketing budget and we can lead it to being just a quarter, or you can cut out this quarter portion. So somehow it is a connection between a quarter and a whole. So यहाँ पर वो concept हमने explore किया। उसके बाद यहाँ पर there are two entities which are coming together. So this can be a lot of things. It could be our clients and their ideal customers coming together. It could also be us and our clients finding each other and uniting to form the S shape. This is a refined version of this.
जब हमने ये क्लाइंट को प्रेजेंट किया, सो दे लाइक the droplet concept of this one. So then we incorporated that and removed the bubble, the conversation bubble, and this is just those two droplets for the logo, and they were a little biased for it. उन्हें ये वाला ऑप्शन काफ़ी पसंद आया था, so they were a little biased for it, but still we went ahead and developed 2-3 color palettes and finalized these 4 logos for them to see. Then they still liked this one, so we developed it into a little far-fetched identity. It's like very basic. It contains just the essentials, the logo, the color palette, and a couple of brand assets, but just that. This is just to give you an essence of how it would look. So this contains all the grids that we worked on, the color palette, branding patterns, and typography. So just like a basic guideline, just to see the brand in action. So I guess this was it. But no, I wasn't satisfied. I wanted to work more. मुझे लगता था there can be better designs that we can explore, और ये अभी भी उतना SaaS प्रोडक्ट जैसा नहीं लग रहा है जैसा मैंने सोचा था. So I went back to the drawing board. I kept this option, but then tried to revamp it into a newer color palette and came up with 2 more options with a more refined brand systems. इसमें मैंने थोड़ा सा लोगो से आगे हटके ये भी सोचा कि ये लोगोस बड़े ब्रांड सिस्टम्स में कैसे ट्रांसलेट होंगे, एंड ये चीज़ दिमाग में रखते हुए जब आप लोगो डिज़ाइन करते हो तब आप ये देख पाते हो कि हमारे लोगो में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बाद में एक्सट्रैक्ट करके एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, वो सिस्टम कैसे कैसे आगे और ब्रांड में रिफ्लेक्ट करे. तो ये एक ऑप्शन तो मैंने रखा. उसके साथ एक और ऑप्शन ये बनाया जिसमें इसमें एक यूजुअल AI का जो मार्क है, which is now usually associated with, उस मार्क के साथ ऐसा ब्रांड पैटर्न बन सकता है. दिस इज देन द लोगो कंस्ट्रक्शन, कलर, a larger brand pattern, some mock-up and typography, and also text, because I thought इस वाली ब्रांड में texture would also play a part, कि how texture is displayed throughout the brand, so I kept it a little texture. Then this is another concept that I explored. ये एक बहुत ही flat concept है. So this concept carries an arrow with an S. S stands for their brand name initial, and this is the logo construction. These are some brand elements, lines, straight lines, arrow. ये सब brand elements को यूज़ करके हम एक काफ़ी लार्जर ब्रांड सिस्टम बना सकते हैं. दिस कैन बी यूज्ड थ्रू आउट सोशल मीडिया पोस्ट्स, बिलबोर्ड्स, इवन स्टेशनरी एंड एवरीथिंग. सो इसीलिए आई सेड कि ब्रांड एलिमेंट्स के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है जब आप SaaS ब्रांड्स डिज़ाइन करते हैं. सो यू नीड टू थिंक कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं आपके लोगो में विच कैन लेटर बी ट्रांसलेटेड इनटू अ बेटर. अब इस लोगो के डिज़ाइन के पीछे यही स्पेसिफिक ग्रिड क्यों, व्हाई दीज स्पेसिफिक एंगल्स, वी कैन टॉक इनटू मच डिटेल अबाउट इट इन सम अदर वीडियो. दिस इज लाइक अ क्विक डीप डाइव इनटू द एक्सप्लोरेशन. तो अब इस स्टेज पे हमने यहाँ ब्रांडिंग पैटर्न्स बनाए एंड शोड हाउ दिस वुड लुक ऑन मॉकअप्स एंड हाउ दिस वुड बी अ वेरी गुड ब्रांडिंग asset, the straight line and this arrow. And I was in love with this, but they still went ahead with this exact logo and they wanted a couple more color options. So I gave them a few more color options and we finally got done with this logo.
in this green palette except the orange one. So we discarded orange finally, and it was only the green palette. Ab green is very unlike SaaS brands. It's not a bad. अलग होना ज़रूरी नहीं है ख़राब होना हो. तो जब आप कुछ अलग कलर का बनाए, जस्ट मेक श्योर कि यू अडेप्ट एवरीथिंग द राइट वे. You can follow WCAG 2.1 AA standards for color contrast. This is a technical term, but you can Google it and get other information about it. But now that we were done with the brand, we were on to creating the landing page. Now this is the landing page. अब landing page बनाते समय we need to focus on the funnel and also hierarchy and also the brand perception in general. So here what I did was, it was pretty simple. I just made I just made this header section pretty large, and हमारी जो भी headline है that is pretty bold. It says monitor and analyze and manage your brand reputation on Reddit. तो I made sure कि first line में ही I can convey to the user कि हमारी brand करती क्या है, because brand awareness is a little. Then there are two big CTAs, a good logo here, a good photo here. These are all very simple things, but then they add to the entire experience, because with each these kind of nudge, this brand color, this brand logo, the more you add them, the more you are enforcing your brand onto the user's mind. You're increasing your brand recall. So then इसके नीचे I added this their key work areas. Post that I added this screenshot of the dashboard with book a demo CTA. So now let's start with the landing page. And landing page में आप देखोगे कि मैंने इसे ब्लॉक बाय ब्लॉक सेक्शंस में डिवाइड करके बनाया है, जिसका रीज़न ये है कि इस लैंडिंग पेज के साथ एक सेल्स फनल भी है, बिकॉज दिस लैंडिंग पेज इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ सेल्स फनल फॉर यूजर्स. तो उसमें विजुअल हायरार्की और कंटेंट हायरार्की, कंटेंट स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, विच शुड गाइड आइडियली योर यूज़र टू योर डिज़ायर्ड एक्शन. तो भी हम देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ और कैसे CTS प्लेस किए हैं स्ट्रेटेजिकली टू अचीव मोस्ट ऑफ दिस लैंडिंग पेज. तो सिंस दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद अ फनल, तो इसका सिंपल होना बहुत ज़रूरी है. सो यूड सी आई हैव पुट अ वेरी सिंपल हेडर, एंड फर्स्ट हीरो फोल्ड में, फर्स्ट स्क्रोल में ही what user would see is this line big and bold that says monitor, analyze and manage your brand reputation on Reddit. ये पढ़ के user now knows कि मेरी brand करती क्या है. This gives user enough information in the first line itself कि उसे अब दोबारा ये नहीं सोचना है कि what he is here for. इसके नीचे की सब टेक्स्ट की लाइन अगर हम देखेंगे तो इट सेज मॉनिटर, मेंशंस, एनालाइज सेंटिमेंट एंड सेफगार्ड योर ब्रांड ऑन रेडिट विद AI. तो ये दो लाइंस पढ़ने के बाद यूज़र अब पूरी तरह से क्लियर है कि वो यहाँ किस लिए आया है. तो अगर वो स्क्रॉल करेगा, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि वो एक इंटेंटफुल लीड है, बिकॉज ये पढ़ने के बाद इफ़ ही इज़ नॉट इंटेंटफुल, वी आर अज्यूमिंग दैट ही वुड आइडियली ड्रॉप ऑफ. So then if he is interested, he can get started and explore features. If he wants to know more and is intrigued by whatever he's seeing down below, he can scroll more and see that we have keyword monitoring, content ideas and all of the features listed right below this. This acts like a great hook कि ये पढ़ने के बाद इनमें से कुछ भी अगर यूज़र के काम का है
तो दिस मेक श्योर कि यूज़र और स्क्रॉल करे. देन अ स्नैपशॉट ऑफ द डैशबोर्ड एंड अगेन अ CTA कि अगर ये डैशबोर्ड देख के यूज़र को कुछ अच्छा लगा सो ही कैन अगेन बुक अ डेमो राइट देन एंड देयर. देन इसके फीचर्स. नाउ व्हेन वी गो टू द फीचर्स वी सी कि ये मैंने अरेंज किए हैं बेंटो ग्रिड में बिकॉज दे लुक वेरी एस्थेटिक, बट ऑल्सो द रीजन वॉज some of their features are actually tools, but some of their features are just features. Let me explain. जैसे यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस सिर्फ फीचर है, बट कीवर्ड मॉनिटरिंग फीचर के साथ टूल भी है. सो यू कैन सी देयर इज एन एरो दैट वुड लीड टू द टूल. सेम वे हियर कंपेटिटर ट्रैकिंग एक फीचर है, बट कंटेंट आइडियाज इज ऑल्सो अ टूल which generates content ideas, so you can directly go there. And same is with here, brand protection is a feature, but AI vault is a tool, so you can directly go there. And also यहाँ पे now we have like their good attention. अगर यूजर ने यहाँ तक स्क्रॉल कर लिया है so we can safely assume that they are invested with their benefits, and now we can tell about our brand. So here we start telling about our brand, that we can monitor real time, 1 million plus posts analyzed, 98% accuracy and brands protected, 500 plus brands protected. And then how we work on the back end, we connect, analyze, send you alert, and then take an action. And then if he has read till here, now we can assume that he knows what his benefits are, he knows what our brand does, and then he knows how our brand works. So he might be really interested now in giving us a try. So we've placed a CTA, big CTA banner right here. And then if the user has come here but has not clicked this, then we can assume he has something else on his mind that he wants to maybe discuss or give feedback on. So post this, we immediately have our FAQs and the email list button. And also if you see, there are active elements here. So this join to protected brands, this is an active element which can keep blinking. So this also adds a bit of motion and directs users attention. ये सब सोचने के बाद now this is a very good, highly converting landing page, but this is just the facade of it. जैसे लोगो और लैंडिंग पेज ब्रांडिंग का पार्ट होते हैं, वैसे ही एक SaaS प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की आइडेंटिटी डिपेंड्स अ लॉट ऑन द डैशबोर्ड. तो अब सिंस दिस इज एन एनालिटिक्स प्रोडक्ट, तो हमारे पास एक डैशबोर्ड भी होना चाहिए जो यूज़र को की फीचर्स दिखाए. अब डैशबोर्ड डिज़ाइन पे स्पेसिफिकली मैं फिर से बाद में एक वीडियो बना सकता हूँ, बट हमने इस डैशबोर्ड में क्या क्या किया है वो आई कैन मेक यू रन थ्रू प्रिटी क्विकली. कि अब इस डैशबोर्ड में सबसे पहले तो वी क्रिएटेड अ गुड साइड बार विद द लोगो एंड ऑल ऑफ द ऑप्शंस. जो भी इनके पास फीचर्स थे वी लिस्टेड देम ऑल हियर. एंड देन वी डिसाइडेड कि अब इसमें से ओवरव्यू यानी कि होम पेज पे क्या क्या टूल्स रखने. सो इफ यू सी द बिग हाईलाइट इज टुडेज मिशन, कि अगर यूज़र होम पेज पे आ रहा है तो उसे सबसे पहले दिखेगा कि उसे आज क्या क्या काम करना है. There are top 3 actionable items which you can action directly from here and also mark them as completed. And these are the top 3 actions which can then increase your daily karma and daily XP and also would add to your streak. Up this karma, XP and streak are pretty familiar words. This is because इस dashboard में we have used gamifying principles. So gamification के concept में यूज़र रिटेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम यूज़र को रिटेन कैसे करेंगे. तो उसके लिए हमने ये स्ट्रीक्स एंड दिस XP अर्न, कर्मा अर्न, ये सब इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स डाले हैं विच विल कीप यूज़र हुक्ड. बट ऑल्सो वी हैव put this quick action items on the front जिन्हें यूज़र जल्दी जल्दी करके
एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड फील कर सकता है, सो दैट ही कैन बी इवन मोर हुक्ड टू आवर प्लेटफॉर्म. देन आफ्टर दिस योर आईज नेक्स्ट गो टू दिस, विच इज़ लाइक द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, कि आपके टॉप सब रेडिट कौन सी है, उसमें आपका एवरेज सेंटिमेंट क्या है, मेंशंस एंड कमेंट्स कितने हैं. देन उसके बाद यू कैन गो टू योर सेंटिमेंट स्कोर और टोटल पोस्ट्स, whatever stats you want to know. And then here you also have a good leaderboard which shows where your brand is, and also is a great nudge for you to just keep refreshing after every action and seeing where your brand has landed. Has it gone to number 1 or is it still on number 2? Leaderboard is also an element of gamification, जिससे लोगों के बीच में competitive spirit बनी रहती है. And then again, to enhance that competitive spirit, we have this competitor watch section, जो भी latest competitor के बारे में news होती है which should get our users attention, वो यहाँ पे pop up हो जाती है, which sums up the entire thing. Like there were more tools, but we decided कि हम home page जितना simple हो पाएगा उतना simple रखेंगे, so that user is not overwhelmed with the data and can gradually soak in everything. So I guess इस exercise के बाद you would be pretty thorough कि कैसे approach करना है एक SaaS brand के design को, और कैसे उस design को we can translate into the landing page and then into the product, and also landing page and product बनाते समय कौन से principles ध्यान में रखने हैं, be it conversion funnels, be it gamification. Gamification सिर्फ एक principle है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग principles हैं जिन्हें use कर सकते हैं depending on the use case and scenario. So I guess that was all for the day. See you all in the next video, and until then, see some mock-ups, and I hope you like the content. Drop a like, drop a comment. See you. Bye-bye.